Pakistan does next. Moving on to the other stories that we're tracking now from Mauritius. Prime Minister Narendra Modi unveiled a grand vision. Now, this was a key bilateral that was held today. Now, he made the remarks after witnessing the inking of several key agreements between India and Mauritius, along with his Mauritian counterpart in the capital city of the island nation. Here's all that you need to know. Prime Minister Narendra Modi is on a visit to mini India. Prime Minister Modi held bilateral talks and announced the enhancement of India-Mauritius relationship, stating that both the nations should elevate to their enhanced strategic partnership. आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। Reflecting on long-standing collaboration, he recalled the launch of Sagar 10 years ago in Mauritius. 10 वर्ष पहले विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यहीं मॉरिशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ across regions. He also paid tributes to the participants of the Dandi March led by Mahatma Gandhi in 1930, describing it as a defining chapter in India's freedom struggle. After the bilateral talks, he headed to Ganga Talao, which is Mauritius's most revered Hindu pilgrimage site. It symbolizes River Ganga for the citizens. The visit of the Prime Minister has strengthened the deep-rooted ties between India and Mauritius. United States President